Students, we are going to start again with the adjectives. Okay, now what is an adjective? An adjective is a word that tells you something more about a noun, that is describing a noun. Adjective वो शब्द होता है जो हमें noun के बारे में और जानकारी देता है. The adjective tells us something more about a noun. It is describing how the noun is, what the noun is. Okay? For example, Meena is a girl. We all know that Meena is a girl. How do we come to know? Even if we have not seen Meena, अगर हमने मीना को देखा नहीं है, बट नाम से पता चलता है हमें कि मीना इज अ गर्ल. यस और नो? नाउ मीना इज अ लेजी गर्ल. आई से मीना इज अ लेजी गर्ल. हमें ये तो पता है कि मीना गर्ल है, मीना लड़की है, बट लेजी से पता चलता है कि मीना कैसी है. मीना इज अ लेजी गर्ल. हाउ इज हर बिहेवियर? ओके, बिहेवियर यानी आई विल नॉट से हर कैरेक्टर और समथिंग लाइक दैट, बट शी इज लेजी इन डूइंग हर वर्क. सो दिस लेजी वर्ड इज टेलिंग अस समथिंग मोर अबाउट द नाउन मीना. यस और नो? The noun is Meena over here, and we know Meena is a girl. But Meena कैसे लड़की है? Lazy. Lazy means सुस्ती वाली लड़की, जो अपना काम टाइम पर नहीं करती होगी, जो अपना होमवर्क नहीं करती होगी. ओ मम्मा, कल के लिए कहा है मैम ने, तो अभी तक कल आया नहीं है, पूरा दिन पड़ा है, मैं बाद में होमवर्क कर लूंगी. Yes or no? So lazy means something who doesn't like to do the work on time. So here this word lazy tells us that Meena is lazy. Yes or no? So this lazy is known as an adjective. Now I say Rohan is a strong boy. Strong. Yes or no? Strong. एकदम मजबूत. Rohan is a strong boy. He can carry heavy things also because he is strong. Okay? So this word strong is telling us more about the noun Rohan. Rohan is the noun, we all know. Subject, yes or no? Noun is a name of a person, place, animal or a thing. Now here the noun is Rohan. Rohan कैसा लड़का है? Strong लड़का है. So this word strong is describing more about the noun Rohan over here. It is telling us something more about the noun Rohan. हमें और जानकारी दे रहा है इस नाउन के बारे में. कैसे? That Rohan is a strong boy. Okay? Then mango is a juicy fruit. We all know that mango is a fruit. Yes or no? It's been known as the king of the fruit. हम कहते हैं आम जो होता है वो फलों का राजा होता है. We all know that it is been known as the king of the fruit. But we also know that mangoes are rasila, juicy. So here the word juicy is telling us something more about the noun mango. It is describing the fruit mango. It is telling us something more about the fruit mango. Now, which is the word that is telling us something more about the fruit? Mango, juicy.
रसीला। स्लाइस का ऐड देखा है कि नहीं हमने? कैटरीना कैफ करके ड्रिंक करती है, दैट इज कॉल्ड रसीला, स्वीट. ओके, सो हियर द वर्ड जूसी इज टेलिंग अस मोर अबाउट द फ्रूट मैंगो. नाउ द वर्ड लेजी, strong and juicy, they are all telling us the quality about the noun. Yes or no? An adjective is a word that gives more information about the noun, that is telling us more about the noun, that is describing the noun. Now here the word lazy, strong and juicy are the qualities of the noun. गुण, गुण जिसे हम कहते हैं. This comes in abstract noun also. Okay, so quality of a noun is known as abstract noun. Adjective is a word that tells you something more about a noun. Now these three words are the quality of the nouns. गुण जिसे हम कहते हैं, आम कैसा फल है? रसीला फल है. मैंगो इज अ जूसी फ्रूट. सो दिस जूसी इज द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट मैंगो. नाउ रोहन इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय. कैसा लड़का है रोहन? स्ट्रॉन्ग. तो स्ट्रॉन्ग इज द क्वालिटी ऑफ द बॉय. ये गुण बताता है रोहन के बारे में. एंड हियर लेजी, मीना इज अ lazy girl. Again quality of the girl Meena. What type of a girl she is? She is very lazy. Yes or no? So these three words come into the adjective of quality. Now adjectives, we all know that adjective is a word that describes a noun, that tells you something more about a noun. Now in adjectives there are three kinds of noun: adjective of quality, adjective of quantity, and adjective of numbers. Okay, so these three words like lazy, strong and juicy, they come into the adjective of quality. Quality, गुण जिसे हम कहते हैं. Is it clear? Now we all know what is an adjective. Adjective is a word that describes a noun, that tells us something more about a noun. Is it clear?